Okay, last class yaad hai we saw for a real object and a concave mirror, the kind of image that is formed for a real object in a concave mirror. And remember, there were these 6 cases. Object at infinity, image is formed at focus. Object between infinity and the center. Object is formed between center and the focus, and all those. There were the 6 cases. All right. When you use a real object and a convex mirror, to be honest, when you use a real object in a convex mirror, you don't get a lot of cases. You just get one single case. Let me first show you how it looks. People are still coming in. I'll just show you how it looks. So let's just make this a convex mirror. याद करो convex के लिए f का value positive रहेगा, ठीक है? And I'll just bring this to the origin. Fine. So what we have over here is enter करना पड़ेगा. Okay. You may not be able to see clearly, but थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे, this is actually a convex mirror. हल्का सा इसका bend तुम्हें शायद से दिखेगा. Slightly this is bent in this manner. I think it's a convex mirror. All right. Yeah, the blue one is the convex mirror. This red guy over here, that's our object. Okay, the red guy is the object. And the green one is the image. Now notice कि convex mirror में there aren't many cases. In fact, it's quite straightforward. If I use a real object, just see how the image is formed. It seems like the image is smaller. It's always smaller, and it's always closer to the mirror. Remember, smaller and closer goes hand in hand. जितना पास रहोगे mirror से, जितना पास रहोगे उतना छोटा दिखेगा, है ना? So if you look at this ray, it's always closer, always smaller. Nothing special going on. The image is always formed on the other side, because after hitting the mirror, the rays always diverge. And look at that yellow line. Whatever rays hit the mirror, they always diverge. So the image is always formed behind the mirror. So whenever you use a real object, you'll always get a virtual image. You'll always get a virtual image which is smaller. The green one is the image. Let me just clarify. Again, I'm repeating. The red guy is the object. The red one is the object. The green one is the image. The red one is the object. The green one is the image. And mirror के पीछे, ठीक है, object mirror के आगे है. आगे वाला side is right. ठीक है? The right hand side is in front of the mirror. The left hand side is behind the mirror. Object mirror के आगे है. Image, green image mirror के पीछे बन रहा है. वो image हमेशा mirror से, it's closer to the mirror and it's smaller than the object. So the image is always diminished. It's always virtual. Always diminished, always virtual, and always upright. Always upright. Remember, I said opposite side means upright. You know, opposite side means upright. So it's virtual, it's upright, it is diminished. Dig gaya sabko? We'll prove this mathematically as well, but I hope you all saw this in the demonstration. तो एक ही केस है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें. Convex mirror के लिए whenever I use a real object, है ना, most of the times this is only used for real objects. Virtual है, फिर और कुछ भी हो सकता है, वो तुम सीधा फिर formula से ही देखोगे. But technically for a real object, which is what you use practically, these are the important cases. And there is only one case. Real object के लिए जब भी use करोगे, you will find the image is always virtual, always diminished, always upright. All right, so why? First of all, पहले diagrammatically समझो. Object से जो भी ray जाएगा, वो rebound होने के बाद ऐसा diverge करेगा.
Rebound होने के बाद diverge करेगा. And therefore you can see by drawing a diagram, you can see कि वो diverging ray को जब तुम ट्रेस करके पीछे लेके आओगे, डाइवर्जिंग रेस को ट्रेस करके पीछे लेके आओगे, यू विल फाइंड दैट द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एंड क्लोजर टू द मिरर. ठीक है, यू कैन चेक दिस diagrammatically. You draw a normal वगैरह and you draw that final ray. The final ray will be very steep. After reflection the ray becomes very steep. So because it becomes more steep, ये image पास में बनेगा. ये ऐसा डायग्राम ड्रॉ करके तुम देख सकते हो. बट मैथमेटिकली कैसे समझना है, फॉर्मूला के हिसाब से कैसे समझना है, सिंपल बात है. देखो, इफ आई टेक एनी रियल ऑब्जेक्ट, मान लो ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस पे प्लेस किया, 8 डिस्टेंस पे प्लेस किया, तो है ना, मिरर के सामने प्लेस करोगे रियल ऑब्जेक्ट को, तो फिर व्हाट डज द कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम? इट बिकम्स -a. जस्ट अ मिनट. Just a minute, guys. I think some spammers enter the meeting. Just a minute. Yeah, I think they've left also. All right, fine. Okay, cool. Let me just check the settings once. People can chat only with me. All right, cool. So I'll explain again. Okay. एक बार देख लो, एक बार ये डेरिवेशन देख लो, then ask your doubts. If I place an object in front of the mirror, मिरर के आगे प्लेस करोगे, याद करो मिरर के पीछे वाला साइड पॉजिटिव है, मिरर के आगे वाला साइड नेगेटिव है. तो मिरर के आगे अगर प्लेस करोगे, मिरर के आगे अगर प्लेस करोगे, देन क्या हो जाएगा? मिरर के आगे प्लेस करोगे तो ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होगा. ऑलराइट, सो देयरफॉर x coordinate of the object is going to be negative. It's going to be -a. U is going to be -a. समझ में आया? Now U is -a, whereas for a convex mirror F is something positive. Okay, for a convex mirror F is something positive. So therefore, if U is -a and F is positive, put it in your equation. So 1 upon V plus 1 upon U is 1 upon F. 1 upon V plus 1 upon U is 1 upon F. All right. सब्स्टिट्यूट करो, U को डाल दो -a, तो देखो क्या आ रहा है इस रिजल्ट में. U को जैसे ही डाल दिया -a, I bring this to the right hand side. Now I get 1 upon V is 1 upon a plus 1 upon f. Okay, 1 upon V is 1 upon a plus 1 upon f. Now इसका रेसिप्रोक, इसका एलसीएम ले लो राइट हैंड साइड में. ठीक है, राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लो. एक बार वापस स्टार्ट से चाहिए, क्या चाहते? anyone is stuck over here? Anyone is stuck over here कि U is -a? A is distance. Okay, A is some length. A is going to be some positive length. Object mirror के आगे है, A is some positive length, so U is going to be -a. All right, U is going to be -a. Now A is the distance of the object from the mirror. A is the distance of the object from the mirror. तुम रियल ऑब्जेक्ट को जितना दूर प्लेस करोगे मिरर से, उतना तुम्हारा A होगा. ठीक है, उतना तुम्हारा A होगा. Now U is -a. Put it in this formula. So I get 1 upon V minus 1 upon A is 1 upon F. उसके बाद no rocket science here. I just take -1 by A to the other side. So it becomes +1 by A. 1 by A plus 1 by F का LCM ले लो. So it becomes F plus A
अपॉन एफ इंटू ए, एफ प्लस ए अपॉन एफ इंटू ए, उसके बाद इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो फाइनली क्या आंसर आ गया, v becomes af upon a plus f. Any doubt in this? ठीक है, I've just found v from that equation. v is af. a कॉमन कैसे आया, अरे कॉमन रेसिप्रोकल ले लो ना, तो af इंटू ए प्लस एफ, एंड फिर a साइड में ले लिया, ऊपर न्यूमरेटर में a था ना, तो a बस साइड में लिया, तो a इंटू एफ अपॉन एफ प्लस ए. अच्छा a कॉमन क्यों लिया, कॉमन लेने के लिए बाबा, this is what you get a into f upon a plus f. तो इसको क्या कॉमन नहीं ले सकता हूं, isn't it a times f into a plus f? ले सकता हूं ना कॉमन, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, अब कॉमन ले लिया, क्यों लिया कॉमन, व्हाई एम आई डूइंग दैट, सिंपल बिकॉज ये जो f अपॉन f प्लस a है, do you agree f upon f plus a has to be less than 1? Because denominator ज्यादा बड़ा है, denominator ज्यादा बड़ा है, a is, remember a is some positive distance, f itself is also positive because mirror ka center lies towards the right, so f upon f plus a is less than 1. All right, now because this is less than 1, what are we proving, a into something less than 1, a into something less than 1 is going to be lesser than a. v is equal to a times a ratio less than 1. Therefore, v will be less than a. समझ में आया? v is going to be less than a. इससे क्या प्रूव किया मैथमेटिकली कि जो इमेज बन रहा है वो मिरर के पास में बनेगा एज कंपेयर टू दी ऑब्जेक्ट. ठीक है, हाँ, एक लास्ट टाइम, ये जो रेशियो है थोड़ा ध्यान से देखो, that ratio is less than 1 because my denominator is bigger. Simple stuff. Now because the ratio is less than 1, I'm explaining again, sun lo, because this ratio is less than 1, b is a times a number less than 1. b is a times a number less than 1. Guys, please switch off your cameras, all right? v is a times a number less than 1. If v is a into a number less than 1, v must be less than a. पहले ये समझ में आया, v must be less than a because v is a into a number less than 1. a into 0.7 क्या होगा, a से कम होगा, है ना? So v is less than a. v is less than a का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इमेज मिरर के ज्यादा पास में है, ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस है, मिरर इमेज उससे ज्यादा पास में है. ऑलराइट, d is closer to the image is closer to the mirror than the object. अगर इमेज और पास में बन रहा है तो इमेज का साइज डिमिनिश्ड होगा. कन्विंस्ड? अगर और पास में बन रहा है तो इमेज का साइज डिमिनिश्ड होगा. मेक सेंस? ऑलराइट, प्लीज नोट कि यहाँ पे, हाँ एक मिनट, आई एम कमिंग टू दैट. प्लीज नोट कि डोंट थिंक a इज नेगेटिव, a इज जस्ट डिस्टेंस. a अपने आप नेगेटिव नहीं है. a नेगेटिव होता तो मैं इधर माइनस साइन डालता क्या, नहीं डालता ना. हाँ, यस अहमद, यू कैन डू दैट. हाँ, a नेगेटिव खुद होता तो मैं माइनस साइन नहीं डालता. a इज नॉट नेगेटिव बाय इटसेल्फ, a इज डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव. वैसा मैंने a को डिफाइन किया, तो u इज माइनस a. ठीक है, a खुद नेगेटिव नहीं है. समझ में आया? अच्छा, v लेस देन a आया, मतलब इमेज इज क्लोजर, देयरफॉर इमेज इज डिमिनिश्ड. अब इमेज वर्चुअल क्यों बन रहा है, पॉजिटिव क्यों आ रहा है, बिकॉज एवरी सिंगल टर्म ओवर हियर इज पॉजिटिव. a इज पॉजिटिव, f इज पॉजिटिव, तो कहां से नेगेटिव होगा ये, सिंपल सी बात है. Diana, I'll repeat that. Philal, do you see that all terms over here are positive? Therefore, the image is virtual. यहाँ पे चार, ये जो भी टर्म है सब टर्म पॉजिटिव है. a पॉजिटिव है, f पॉजिटिव है,
तो v क्या आ रहा है, v पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब इधर कहीं ना कहीं पीछे बन रहा है, पीछे बन रहा है मतलब वर्चुअल इमेज बन रहा है. गॉट दैट? गॉट दैट? And as for the f upon f plus a thing, somebody still stuck on that. F upon f plus a, this is a ratio. तुम क्या ऐसे ही लिखोगे तभी समझेगा क्या? This is a ratio which is greater than 0 and less than 1. This is a ratio greater than 0, less than 1. Multiply all sides with a. This is still 0. This is af upon a plus f. And this is a. All right? अच्छा, ये बीच वाला टर्म क्या हो गया? बीच वाला टर्म हो गया v. और बीच वाला टर्म हो गया v. सो यहां से आ रहा है कि v is greater than 0, v is less than a. Convinced? That's all I was trying to say. Okay? Cool. Okay, fair enough. All right, so this is just the mathematical proof. But yeah, I think convex mirrors, you can just remember there is nothing special going on. You always have a diminished image. You always have a diminished image, always have a virtual image. And also, another point is because object and image are on the same side or on opposite sides, because image is on the opposite side, what do we get a result of as a result of that? याद करो last class में बोला when image and object are on opposite sides, what conclusion do we get? Yes, an erect image or an upright image. Yes, you get an upright image. वर्चुअल का कारण है मिरर के पीछे बनना. These normally go hand in hand, but वर्चुअल का कारण है मिरर के पीछे बनना. अपराइट का कारण है ऑपोजिट साइड पे बनना, है ना. डिमिनिश्ड का कारण है for it because it lies closer to the mirror. So it's virtual, it's diminished, and it's upright. Okay. Aman, I'm not saying b is less than 1, I'm saying b is less than a. थोड़ा ध्यान से देखो. This entire number is less than 1, so b becomes less than a. Less than a means it's closer to the mirror, therefore the image is diminished. Got it? Everyone got this? This is just the mathematical proof for what you already saw in this illustration. यहाँ पे जो हो रहा है देखो ना, image formed is virtual. Image formed is virtual. It's upright and it is diminished. Okay? It's virtual, upright, and diminished. All right. So it will never be the same size for a real object. All right, guys. It will never be the same size for a real object. अब सुन लो, एक चीज सुन लो. वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस देखने का जरूरत नहीं है. Virtual objects are not common. They are not used often practically. So you don't need to be familiar with the case for virtual object. कभी ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे बन रहा है, कभी अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो तुम फिर कुछ मेमोरी से नहीं करोगे, तुम बैठ के निकालोगे. v निकाल दो, एक बार v निकाल दिया. You know how magnification works. You find the value of magnification, है ना, and you see. अच्छा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है मतलब अपराइट है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो मैग्निफाइड है, एंड सो ऑन.
तो बन कुछ भी सकता है, वो एक्स्ट्रा जो भी केसेस है वो हमेशा तुम करके देखोगे। बन कुछ भी बन सकता है। These extra cases you will solve and see. वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज दोनों साथ में बन भी सकता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। But the frequent common cases are the ones where you use a real object. So be familiar with that. Real object, convex mirror, very straightforward. एक ही केस है। Concave mirror में there are some multiple cases, which we saw in the previous class. All right. Here is a summary. Convex mirror में when the object is far away, image is obviously formed at the focus. Convex mirror में when the object is far away, image is formed at the focus, like these green rays demonstrate. Convex mirror में अगर दूर से parallel rays आ रहा है, image कहाँ पे बनेगा? Image focus पे बनेगा। ठीक है? Now that is the first case. In the next case, जब तुम ऑब्जेक्ट को पास में लेके आओगे और पास में लेके आओगे, just have a look, notice कि अगर तुम ऑब्जेक्ट को और पास में लाओगे, तो this time when the rays reflect, they are going to become even steeper. If they become even more steep, then where will the image be formed? Ahead of the focus. So when the object lies between infinity and the mirror, इमेज पता है कहां पे लाई करता है? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी एंड मिरर के बीच में लाई कर रहा है, इमेज फोकस और मिरर के बीच में लाई करता है। इमेज फोकस और मिरर के बीच में लाई करता है। गॉट दिस? इमेज फोकस और मिरर के बीच में लाई करता है। हाउ डू आई प्रूव दैट? नोटिस ओवर हियर, इनफैक्ट लेट मी ऐड दिस ओवर हियर इटसेल्फ। कैसे प्रूव करूं कि इमेज फोकस के आगे लाई करता है, मतलब फोकस और मिरर के बीच में लाई करता है? लुक एट दिस फॉर्मूला। कैन आई नॉट राइट दिस एज f into a upon a plus f? यू अग्री? लिख सकता हूं ऐसे? अच्छा, ऐसे लिख के मैं क्या प्रूव कर रहा हूं? व्हाट इज v लेस देन? If I write it in this form, what can I say? I can say v is less than f. Interesting. V is less than f. V is less than f means image will be formed between the object and the focus. Image will be formed between the object and the focus. Image will be formed between object and the focus. Sorry, galat bol raha hu. Image will be formed between mirror and the focus. My bad. Image will be formed between the mirror या mirror का pole and the focus. Image will be formed between the mirror and the focus. Okay? So that is what I'm saying. So whenever your object lies between infinity and the mirror, image mirror के पीछे बनता है। You don't have to write, everything is mentioned here. Image mirror के पीछे बनता है, focus और mirror के बीच में, focus और mirror के बीच में। Got that? As the object comes from infinity to zero, image moves from the focus to zero. Okay? Image moves from the focus to zero. Got that? Any doubt? Last time, object को बहुत दूर से लाओ. By the time object reaches the mirror, image also reaches the mirror. That's the problem. Anyways, got that? By the time the object reaches the mirror, image also reaches the mirror. Chalo. No one saying anything. I guess everyone understood now. As the image reaches the mirror, its size increases. Yes. As the image reaches the mirror, उसका size बढ़ते जाता है.
All right, now, uh, just a minute. I've just stopped sharing. I want to conceal something, and then I'll ask you that. All right. Consider this question. Think and answer what kind of mirror is used in rear view mirrors. Now, some of you may have learned this as general knowledge. Some of you may have memorized. Harsh, you're right. Some of you may have learned this as general knowledge, but I want you now think and answer what kind of mirrors used in rear view mirrors, automobile की context में. See, so one of you mentioned the word upright. पहले don't worry about upright. जब भी real object बनेगा and virtual image बनेगा, virtual image हमेशा upright रहेगा. So don't worry about upright. Rather, what do you need to consider? First and foremost, you need to consider that it has to be virtual. है ना? Virtual होना चाहिए. Virtual होना चाहिए. Because सिर्फ virtual दिखेगा. एंड दूसरी बात, डिमिनिश्ड होता है या मैग्निफाइड होता है तुम्हारे रियर व्यू मिरर में? डिमिनिश्ड होता है या मैग्निफाइड होता है? डिमिनिश्ड होता है. सोचो ना, तुम्हारे छोटे से रियर व्यू मिरर में पीछे का पूरा दुनिया घुस रहा है. big cars are fitting into that tiny rectangle. That's a diminished image that is being formed. Yeah, that's a diminished image that is being formed. So कहाँ पे diminished बनेगा? Virtual and diminished कहाँ पे बनेगा? We just saw the example. Convex mirror. ठीक है, तो virtual के तीन ही केस है. Virtual तो एक तो plain mirror में virtual बनता है, but वो same size का बनता है ना? फिर convex mirror में we just saw convex mirror में virtual and diminished बनता है. Convex mirror में virtual and diminished बनता है. और कब virtual बनता है? There is one more special case जहाँ पे virtual बनता है. That is your concave mirror. Which case is that? This sixth case. When you place the object between the focus and the mirror, you get a virtual magnified image. So remember that. Concave mirror, focus and pole के बीच में place करोगे, virtual magnified mirror बनेगा, image बनेगा. Whereas convex के case में virtual and diminished image बनेगा. So our answer for the first one, virtual and diminished needed. We need a convex mirror. ठीक है, your rear view mirrors are going to be convex. ये रटो मत, but understand the properties. And if at all a question like this comes, answer it based on the properties that you have understood. ठीक है? So virtual image चाहिए, diminished image चाहिए, convex mirror definitely जरूरत पड़ेगा. Don't worry, virtual के साथ साथ upright बनेगा ही बनेगा. For a real object, virtual image lies on the other side. So upright बनेगा ही बनेगा. Okay. Second one, magnifying mirror used by dentists. They stick a tiny mirror inside your mouth, but then they want to get a magnified image of the back of your teeth. So you'll use the opposite. You'll use a concave mirror. You'll use a concave mirror, but किस condition में you'll use a concave mirror of ऐसा focal length कि तुम्हारा object हमेशा mirror and focus के बीच में lie करता है. ठीक है? ठीक है? So anyways, जब तुम mirror use करते हो, that mirror is placed very close to your teeth, है ना? मान लो normal distance is 2 centimeters or something. So then the dentist will use a concave mirror which has focal length greater than 2 centimeters. 5 या 10 centimeter का focal length वगैरह use करेंगे. ठीक है? Yes. Your eye can only see virtual images. So the image will be virtual. This is that case. Remember, when the object lies between the focus and the pole, you get a virtual magnified image form. Okay, this is the sixth case of concave mirrors. All right. Is it also used for makeup mirrors?
आई हैवंट सीन मेकअप मिरर्स, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है कि मेकअप मिरर मैग्नीफाइंग होता है या डिमिनिश्ड होता है. माय गेस इज शायद डिमिनिश्ड इमेज बनेगा. सिंपल है. इफ यू फिगर आउट, इफ यू कैन यूज योर ब्रेन्स एंड फिगर आउट कि डिमिनिश्ड है, देन डिमिनिश्ड है तो कॉन्वेक्स है, मैग्निफाइड है तो कॉन्केव है. आई डोंट नो डिमिनिश्ड होता है या नहीं होता है. ओनली गर्ल्स कैन आंसर दैट. ठीक है. ओह कूल. Who is that? Ayush, that's different image formed on your retina is that's formed by a lens that you see as upright. Okay. ये फिलहाल we are just dealing with mirrors yet. Okay. ठीक है. बाकी इसी बाकी तुम्हें फिगर आउट करना है कॉन्वेक्स या कॉन्केव. तुम प्रैक्टिकली सोचो मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड. बॉटम लाइन है मैग्नीफाइड के लिए कॉन्केव एंड डिमिनिश्ड के लिए कॉन्वेक्स. ठीक है. द रेस्ट यू कैन फिगर आउट. दिस इज अ क्वेश्चन आई towards the end of the class I'll ask you to try, so we'll discuss this later. I'll give you this as a homework question. Okay, this I've given the other batch as well. To me as a homework question dunga. I'll describe what the question is and we'll come to that. Okay. Concave mirrors are used to converge light. Koi bol raha hai? Yes. So by nature concave mirrors are said to be converging kyunki when light rays come they converge. Yeah, that's quite logical. Concave mirrors are said to be converging as they converge parallel light rays. Convex mirrors are said to be diverging as they diverge parallel light rays. Okay. All right. Now a very crucial point, and this has to do with speeds. Are we going to learn about telescopes and stuff? Not in this chapter. Telescopes and microscopes are not in your JEE advanced syllabus. They are in your mains syllabus, and that's a small part which normally either is done at the end of your advanced syllabus, complete advanced syllabus, or that may be done at the end of this chapter. So that based on what pace decides, we'll see. Okay, but that's a small part. Telescope, microscope comes under a separate chapter. So don't worry about that right now. Okay, acha. Next section is image speed. Now this is interesting. Okay? Image speed. All right. So, what I'm going to tell you over here is the way you can find image speed for any instrument that you use. ठीक है. तो हम मिरर के लिए करने वाले हैं, but with the same logic तुम आगे जाके लेंस के लिए भी कर सकते हो. So try and understand this derivation. I'm going to start with a plain mirror and we're going to arrive upon a very obvious result. पहले एक चीज दिखाता हूं. इमेज स्पीड मतलब क्या? जैसे मान लो तुम्हारा मिरर हिल रहा है, तुम दौड़ रहे हो, तो इमेज का स्पीड क्या होगा, ऐसा सवाल आता है. मिरर भी मूव हो रहा है, यू आर आल्सो मूविंग, व्हाट विल द स्पीड ऑफ द इमेज बी, ऐसा सवाल आता है. सो वी आर गोना ट्राई एंड अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस. एंड ऐसा सवाल सिर्फ प्लेन मिरर के लिए नहीं आएगा, कर्व्ड मिरर, लेंस, कोई भी इंस्ट्रूमेंट के लिए आ सकता है. तो वी आर गोना लर्न how to tackle such questions, how to derive the results. Remember, this chapter is not about just memorizing results. As much as possible, especially results like these, learn to derive them. All right. So the more you can derive, the lesser you have to memorize. Now,
First of all, mirror के लिए, plane mirror के लिए, what is the formula? What is the formula? So if you try applying 1 by v, if you try applying 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by r, when you try applying this formula, what is r for a mirror? Remember we talked about this. R for a mirror is infinity. So because r for a mirror is infinity, because it is infinity, this entire term is going to become 0. So 1 by v plus 1 by u is going to become 0. All right. If 1 by v plus 1 by u has to be 0, LCM ले लो. V plus u upon vu has to be 0. The only way this can be 0 is if the numerator is 0. So if the numerator is 0, then what is the result we are getting as a consequence of this? We get that v is equal to minus u. And very straightforward. This is of course what our mirror formula should become for a mirror. Object अगर तुम 3 meters आगे place करोगे तो u हो जाएगा -3. Image किधर बनेगा? Image बनेगा +3 पे. Image बनेगा mirror के पीछे. Simple stuff. We know this. We know कि image is formed at the same distance on the opposite side. For a mirror, v is always equal to -u. Now, ये रिलेशन को अब देखो क्या कर लो. ये रिलेशन को अब डिफरेंशिएट करो. Somebody is asking, why does r tend to infinity? We have gone over this. R tends to infinity because there is no curvature. This straight line can be considered to be a part of a very, 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 very large circle. Because it can be considered to be a part of a very large circle, radius of curvature is infinite. ठीक है? फॉर्मूला क्या है? प्लेन तुम्हारा जो सादा सा मिरर था, मिरर फॉर्मूला था, उसमें r को इंफिनिटी डाल दिया प्लेन मिरर के लिए. ये पूरा टर्म गायब हो गया. ये पूरा टर्म गायब हो गया. Oh, I'm so sorry. Thanks for correcting. 2 by r. Yeah, thanks for that. 2 by r. Okay, printing mistake. So ये जो पूरा टर्म जो है, that entire term disappears. Now because that entire term disappears, what is the conclusion? LCM ले लो, very simple maths. LCM ले लिया, v plus u upon vu is equal to 0. The only way this left hand side can be 0 is if the numerator is 0. The numerator has to be equal to 0. वहां से आ गया v is minus u. Very straightforward, easy, makes sense. Mirror के लिए v is equal to minus u. This is how the mirror formula will look for a plane mirror. Now what do you do? अब देखो. Now differentiate both sides with respect to t. Alright, so differentiate both sides with respect to t. Differentiate with respect to t. T मतलब time. Differentiate with respect to time. So I'm going to get dv by dt. Simple. dv by dt is minus du by dt. dv by dt is minus du by dt. इसका मतलब क्या आ रहा है? Image speed is same in magnitude as object speed. Only thing its direction is opposite. Image speed is same as in magnitude as object speed. Only thing its direction is opposite. All right. But okay. So just to give an example, this is something we already know. Just to give an example, if my object is moving towards the right with a velocity of 2 meters per second, if my object is moving towards the right with a velocity of 2 meters per second, with what velocity will my image move?
let's say my mirror is stationary, mirror is at rest, so my image should move towards the left. Everyone is saying -2, obviously that means towards the left, है ना? So इसमें if you take right hand side as positive, then this means du by dt is positive 2. If du by dt is positive 2, then it means that dv by dt is uska negative. dv by dt is negative of du by dt, so it is -2. -2 का मतलब your image, अगर ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तुम्हारा इमेज लेफ्ट की तरफ आएगा with a velocity of 2 meters per second. Alright, this is a very simple example. थोड़ा और complicated आप देखेंगे, but this is a very simple example. Makes sense? Yeah? This result makes sense? Okay. Now one thing I want you to note is, note, I'll write it on this page. Okay, now this is very important. I hope you guys are comfortable with relative motion. I hope you are comfortable with relative velocity. Okay, so note, V and U were distances of the object image and the object from the mirror. Okay, were distances of the image and the object from the mirror. Okay, so they were distances of the image and the object from the mirror. So because they were distances of the image and the object from the mirror, their derivative, therefore, their derivative would imply velocities. Therefore, their derivatives would imply velocities relative to whom? Would it be relative to the ground? Yeah, would it be relative to the mirror? Should be relative to the mirror. है ना? ये बोलना क्या चाह रहा है? बोल रहा है कि u is distance from the mirror. अगर u is distance from the mirror, du by dt is rate at which that distance changes. Means du by dt is velocity of object relative to the mirror. dv by dt is velocity of object relative to the mirror. Okay, so therefore their derivatives are actually velocities relative to the mirror. So when I say dv by dt and is equal to minus du by dt, this is relative to the mirror. These are velocities relative to the mirror. That is something to remember. All right. These are velocities as seen by the mirror. Yeah, WRT. WRT means with respect to the mirror. ये topic, I'll just finish this topic. इसके बाद homework करेंगे. So just try one example. Come on, एक सवाल try कर लो. Let's say my object has a velocity of, previous page देखना है, देखो जल्दी. अच्छा देख लो. Okay. In fact, let me add it here itself. Same goes for acceleration. Same goes for the accelerations relative to the mirror. Same goes for the accelerations with respect to the mirror. क्या आएगा अगर मैं ये ऊपर वाले रिलेशन को एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? एक्सेलरेशन मिलेगा. सेम गोज फॉर देयर एक्सेलरेशंस
when you are using this, please remember कि these are accelerations relative to the mirror. ठीक है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वाले ऐसे क्वेश्चन में कुछ फर्क नहीं होगा, सिमिलर ही अप्रोच होगा, बस नाम में थैंक्स वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन होगा. ठीक है, ऑलराइट, सो जस्ट डन विद दिस पेज. I'll give you that sample question. Give it, try it out. See? So let's say you have a question like this. Let's say your mirror is going with a velocity of 4 meters per second. And let's say that's the silhouette side. Let's say our object is going with a velocity of 2 meters per second. Find the velocity of the image. ठीक है, simple question है. Please take time and answer. Don't answer incorrectly in a haste. Find the velocity of the image. You don't want to get this wrong. Okay, one of you is asking me, is 2 meters per second with respect to the mirror? Please, when nothing is mentioned, what will you assume? When nothing is mentioned, क्या assume करोगे? Everything is with respect to the ground. Question repeat कर रहा हूँ, एक mirror है, एक object है. O stands for object. This kind of diagram is for the mirror. This is the velocity of the mirror. That's the velocity of the object. That's all you need. I'm asking you, find the velocity of the image. When nothing is mentioned, what has been given is with respect to ground. What has been asked is also with respect to ground. Okay? Please don't get this wrong. कौन silly mistake मत करो. I haven't received a correct answer yet. सत्य का सही हो गया. पार्थ का सही हो गया. सही है, सत्य एंड पार्थ का सही हो गया. Can I please repeat the question once? यार दिख रहा है ना, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया है, मिरर का वेलोसिटी दिया है, और बाकी मैंने लिखा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ द इमेज. Guys, I'm receiving a lot of answers. Only फिलहाल सत्या एंड पार्थ का आंसर सही है. So you guys are making some mistakes. Okay, तो चेक करो. Look at your mistake. फर्स्ट ये क्या है, ये तुम्हें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताना है. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताना. तो पहले तो फर्स्ट स्टेप 1 इज फाइंड विथ रिस्पेक्ट टू मिरर. स्टेप 1, मिरर के फ्रेम में जाओ. मिरर के फ्रेम में क्या वेलोसिटी दिखेगा, ऑब्जेक्ट का क्या रहेगा? Yes, Sanika, but I don't know why you're saying minus. You need to answer as left and right. I'm not sure why you're saying minus. Okay? हाँ, मिरर देखो, अब देखो, अब सुन लो. ठीक है? A lot of you are answering 2, 6, 4, -2, -6. They're all wrong. देखो, मिरर के फ्रेम में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा? क्या लगता है? ये तो सिंपल नोशन. ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना. ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो स्पीड्स गेट एडेड अप रिलेटिवली. तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड दिखेगा.
सबको इतना आता है, relatively ऑब्जेक्ट का velocity मिरर के हिसाब से इतना दिखेगा, है ना, everyone knows this, okay, fair enough. फिर step 2, ये जैसे ही हो गया, फिर step 2, step 2 is image का velocity is negative of object का velocity. Image का velocity is negative of object का velocity. Therefore, image का velocity will be 6 meters per second towards the right. अब सुनो 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 सुनो, this is not the answer. ये 6 meters per second किसके हिसाब से होगा? किसके हिसाब से 6 दिखने वाला है? मिरर के हिसाब से 6 दिखने वाला है. Alright, but मिरर खुद आगे जा रहा है. Mirror itself is moving ahead with 4. And mirror को image और तेजी से जाते हुए दिख रहा है. With respect to the mirror, the image is moving away with a speed of 6. That means what would the actual speed be? Yes. The actual speed would be 6 plus 4. See, this is actually going ahead with a speed of 10. तब relatively 6 दिखता है. See? It's 6 with respect to the mirror. That's not, 6 is not the, अच्छा, you didn't understand. यहाँ तक you followed? यहाँ तक you followed? Anyone stuck? Till this step or before this step, please let me know. Step 1, mirror के respect में object का speed निकाला. Sir, but it isn't specified कि we have to find velocity with respect to ground. Guys, golden rule for your entire JEE, if velocity is mentioned, please take it to be velocity with respect to ground. Velocity mentioned किया है, it's always with respect to ground unless mentioned otherwise. All right, unless mentioned otherwise. अच्छा, कोई पूछ रहा है 6 कैसे आया? Simple बात है यार. In a train, when you're two local trains, when they go in opposite directions, you find that train going in the opposite direction to be moving very fast. Why do you feel it's moving that fast? Because relatively your speeds add up. Opposite direction में जब जाओगे, your speeds add up. है ना? Simple logical idea है ना? So mirror के हिसाब से both are separating. So mirror के हिसाब से object का speed दिखता है 4 plus 2, 6 towards left. भावना समझो, -6 वगैरह छोड़ दो, भावना समझो. ये वेक्टर इक्वेशन dv by dt is minus du by dt. सही है. You're correct in saying this is -6 and then minus of -6 is +6. All of that is correct. But it's not the minus and the plus which is important. Minus and plus makes sense to those who know what the axis is. What is important is left and right. ठीक है, -6 मतलब 6 towards left, उसका नेगेटिव हो जाएगा 6 towards right. ठीक है, so you can skip some of the steps. तुम्हें लिखना है -6 and फिर माइनस का माइनस प्लस 6 करके इमेज का वेलोसिटी 6 towards right लेके आना. That also works. That's also fine. तो तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो. नेगेटिव का मतलब सेम वैल्यू बस ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो यहां से इमेज का आ गया. लास्ट स्टेप क्या है? तुम्हें लास्ट स्टेप के लिए गो बैक टू द ग्राउंड फ्रेम. क्वेश्चन ने नहीं पूछा मिरर के रिस्पेक्ट में निकालो. इफ क्वेश्चन सेज जस्ट फाइंड वेलोसिटी, यू शुड अंडरस्टैंड दे आर आस्किंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ग्राउंड के फ्रेम में निकालना है हमेशा. तो मिरर खुद 4 से जा रहा है. अगर मिरर खुद 4 से जा रहा है, इमेज का एक्चुअल वेलोसिटी शुड बी, सी इमेज इज, मिरर के हिसाब से इमेज 6 के स्पीड से आगे जा रहा है, तो फिर दैट मींस इमेज शुड बी 6 meters per second फास्टर देन द मिरर. सो इमेज का स्पीड शुड बी 4 plus 6 should be 10 meters per second. Velocity of image with respect to ground is velocity of image with respect to mirror plus velocity of mirror with respect to ground. बैठ के वो वेक्टर इक्वेशन बड़ा सा लिख सकते हो या थोड़ा लॉजिकली भी कर सकते हो. Whichever way you are comfortable with relative motion. Got this? Okay. Now
maybe 5 more minutes, then we'll discuss the homework. 5 हो जाएगा क्या? चलो, let me introduce this idea as well. Curved mirror, ठीक है? Curved mirror के लिए कर्व्ड मिरर के लिए भी ये सवाल तुम आसानी से कर सकते हो, ठीक है? तो देखो, तुम्हें अगर ऐसा कर्व्ड मिरर के लिए सवाल आया तो व्हाट यू विल डू इन द एग्जाम? सिंपल सी बात है, पहले मिरर फॉर्मूला लिखो, है ना? फर्स्ट राइट अ रिलेशन बिटवीन D एंड U. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कैन यू टेक अ गेस? फॉर्मूला डिराइव करने के लिए नेक्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट. वेरी नाइस. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू T. वैल्यू ऑफ R, वैल्यू यू कैन लीव इट दिस वे इटसेल्फ. R के टर्म्स में ही लिख लो. You'll get a formula. Just leave it this way itself. In fact, it does not matter. This is not going to matter because what will happen when I differentiate with respect to T? So when I differentiate, right hand side is going to become 0 because this guy is a constant. Constant ka derivative is 0. Left hand side, help me out. Do you know your, come on, derivative of 1 by V? क्या करोगे? इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू T चाहिए ना, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा ना. इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू T चाहिए तो चेन रूल लगा लो. कैसे? इधर dv कर लो, ऊपर फिर से dv और dt लिख लो. ठीक है, चेन रूल लगाया मैंने. आई एडेड dv बिलो 1 by v so that this guy can get differentiated. इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, आंसर इसके टर्म्स में चाहिए. दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, सो वो टर्म को वैसे ही रखना है. सिमिलरली 1 by u का डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे? I don't need a big zero later. 1 by u का डेरिवेटिव के लिए instead of doing it with respect to dt, du के रिस्पेक्ट में करो, तब जाके डिफरेंशिएट होगा. एंड फिर बगल में वापस du लिखो एंड नीचे अल्टीमेटली dt लिख लो. ठीक है, अगेन d1 by u by du, दैट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, फॉर्मूला बेस्ड है, इसको हाथ नहीं लगाना है. दैट इज an important term, that is object's velocity. Okay? And right hand side of course is going to be 0 because that's the derivative of a constant. चेन रूल लगाने, ठीक है, सिर्फ चेन रूल लगाया मैंने. 1 upon v का डेरिवेटिव है ना, v रेज टू -1 का डेरिवेटिव इज -1 upon v स्क्वायर. सही है, -1 upon v स्क्वायर. सिमिलरली इंटू dv by dt. 1 upon u का डेरिवेटिव is -1 upon u square, -1 u raised to -2, है ना, into du by dt. Any doubt till this step? RHS 0 कैसे होगा? RHS is derivative of a constant with respect to time. नहीं, वहां से 0, वो constant का डेरिवेटिव था. अच्छा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? dv by dt is rearrange these terms, dv by dt into -1 by v square. Sorry, 1 by u square को उधर ले लो. ठीक है, is dv by dt into -1 by v square. एंड फाइनली ये -1 by v square को उठा के राइट हैंड साइड पे डाल दो, तो क्या आंसर आ जाएगा? आंसर आएगा dv by dt, इमेज का वेलोसिटी, इज -v square by u square, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी. इमेज का वेलोसिटी इज ऑलवेज -v square by u square, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी. v square by u square by the way is magnification का स्क्वायर. v square by u square is magnification का स्क्वायर. तो इमेज का वेलोसिटी इज मैग्निफिकेशन का स्क्वायर du by dt माइनस मैग्निफिकेशन का स्क्वायर du by dt. ऐसा रिलेशन आ गया. समझ में आया डेरिवेटिव?
Again, your same story, V and U were distances of object and image. Therefore, यहाँ पे what are these velocities going to be? Are they velocities with respect to ground? Are these velocities with respect to ground? No, they are with respect to the mirror. These are velocities with respect to the mirror. See, this is your formula. This is how you can derive it in the exam as well. Example question देखेंगे. यहाँ पे notice the minus sign. Then minus sign and m square. Can you see that dv by dt is always negative of du by dt? dv by dt is always negative of du by dt. Because of that, you will find कि image का motion का direction हमेशा object के motion के direction के opposite होगा, है ना? ये तुम प्लेन मिरर के लिए तुम अच्छे से जानते हो कि if you walk towards a mirror, image will move in the opposite direction and come towards the mirror. But ये सिर्फ प्लेन मिरर के लिए नहीं होता है, हर मिरर के लिए ट्रू है. For every mirror, image का motion का direction will be opposite that of the object. Why? dv by dt is negative of du by dt. Okay? I'll write that point as well. As much छोटा. I'll just repeat that point. Okay? As image as the image velocity and the object velocity, as the image's velocity and the object's velocity have opposite signs, come on yaar, अरे यार, and the object's velocity have opposite signs. I'll fix that. As the image's velocity and the object's velocity have opposite signs, they will always move in opposite directions. They will always move in opposite directions. Remember, you saw this for the concave mirror and convex mirror. I showed you that for the convex and the concave mirror, whichever direction I move the object, image was moving in the opposite direction. हमेशा. याद है? देखा था ना मिरर के केस में, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट की तरफ ला रहा था, इमेज राइट की तरफ जा रहा था, है ना? सो दिस इज ट्रू फॉर एवरी मिरर. व्हाट आई हैव सेड ओवर हियर इज, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है ना, माइनस एम स्क्वायर इज समथिंग नेगेटिव. ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर पॉजिटिव होगा, इमेज का वेलोसिटी नेगेटिव होगा. मतलब ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में जाएगा तो इमेज उल्टा डायरेक्शन में हमेशा जाएगा. गॉट इट? What was your doubt in the last step? कुछ भी नहीं किया है. ये जो रिलेशन आया उसी को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ टर्म्स को. राइट हैंड साइड पे लेके गया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर को एम स्क्वायर लिखा, बिकॉज एम इज माइनस वी बाई यू, मैग्निफिकेशन का स्क्वायर लिखा. ओके, just try one question out and then I'll give you one question for homework and I'll discuss the homework questions. एक question बस कर लो. This time let's not move the mirror. Okay, let's just keep the mirror at rest, just for you to get the idea. Okay, so let's say एक mirror है जिसका radius 10 दे रहा हूं. याद करो, I'm just giving you radius as 10. You need to figure out what R is. Should it be positive? Should it be negative? Mirror concave है. तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर दूर है
एंड ऑब्जेक्ट 5 के स्पीड से जा रहा है मिरर की तरफ. Please try to find the velocity of the image. The mirror is at rest. Find the speed of the image. Velocity of the image. Try, Karan. I'll just read your doubts in the meanwhile. Vaishnav, notice there's a square. अच्छा, one of you said कि m minus v by u है, but भाई m minus v by u है, but square करोगे तो m square तो v square by u square हो गया ना. हाँ, got it right? Cool. Square करोगे तो वो minus हटेगा, तो v square by u square is m square. Okay, चलो try कर लो. And for the sake, for your benefit, I'll write the formula. Okay, in the exam, if you don't remember, you will derive the formula. For the time being, I'm writing out the formula. Very nice, Parth. हार्दिक का सही है, केदार का सही है, शुभम का सही है, सत्य का सही है, पार्थ सही है. तन्मय थोड़ा आई थिंक चेक कर ले एक बार, यू एंड बी आई थिंक एक्सचेंज कर लिया तूने फाइनल स्टेप में. रुद्रा का सही है. Just give half a minute more, just try it out. ओके, देखो गाइस, आएगा 5/9, 5/9 टुवर्ड्स लेफ्ट. कैसे? फर्स्ट व्हाट यू विल डू इज, फर्स्ट यू विल फिगर आउट, यू नो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना. सो यू नो दैट ऑब्जेक्ट सामने है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -20 सेंटीमीटर्स. फिर सिमिलरली रेडियस बता दिया, ऐसा लूजली 10 बताया, बट सेंटर तो सामने लाई करता है. एंड वी ऑल नो कि मिरर का फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस वहां पे है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पीछे की तरफ है ना. सो गिवन ऑल ऑफ दैट, you will of course, knowing that the center lies over here, you will take r as -10 because we have a concave mirror. Concave mirror में center always lies in front of the mirror, therefore center center का coordinates negative होगा, -10. सेंटीमीटर्स लिखना नहीं है, चलेगा. okay? या अभी फिलहाल since there are different units going on, if you feel you may get confused, लिख लो सेंटीमीटर्स. Now इससे क्या आंसर आता है 1/v के लिए? तो फर्स्ट फिगर आउट v है ना. पहले इमेज कहाँ पे बनता है वो निकाल दो. इमेज जहाँ पे बनता है वो एक बार मिल गया, फिर मैग्निफिकेशन वगैरह मिल जाएगा. सो 1/v प्लस 1/u इज 2/r. ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/v is plus 1/-20. ठीक है, you can of course, you don't need to write so many steps in the exam, you will do it as quickly as possible.
I'm just writing so that no one gets lost, but you have to do it quickly. 1 by v plus 1 upon minus 20 is 2 by minus 10. उधर ले लो, LCM ले लो, तो minus 1 by 20 positive 1 by 20 होगा right hand side पे, and minus 2 by 10 minus 4 by 20 हो जाएगा. Okay, so यहाँ से आ जाएगा कि v is minus 3 by 20. Sorry, 1 upon v is minus 3 by 20. Don't forget to take the LCM. So v itself is minus 20 by 3. ये एक बार तुम्हें मिल गया. चाहिए क्या आएगा? ये naturally सेंटीमीटर्स में आएगा. Since everything in this equation was in centimeters, ये भी सेंटीमीटर्स में ही आएगा. अब ये एक बार आ गया, फिर अब मैग्निफिकेशन, अच्छा ये एक बार आ गया, then you can find the either you find the magnification or you can directly use the result. dv by dt is minus v square by u square du by dt. ठीक है. अच्छा, du by dt क्या है? थोड़ा केयरफुली देख लो. Since you have taken right as positive, du by dt is positive 5 meters per second. Positive 5 meters per second. Positive क्यों? हमने right को, वो right की तरफ था. ठीक है. And yes Ayush, एक मिनट, I'll just get to that point. फिर v वगैरह केयरफुली सब्स्टिट्यूट करो. v is 20 by 3. ठीक है. If you are very worried about the units, write the units. If you write the units, you realize कि the units जो सेंटीमीटर वाले units है वो कट जाएगा. ठीक है. यहाँ पे सेंटीमीटर वाले units गायब हो जाएंगे. फाइनल आंसर मीटर पर सेकेंड्स में ही आएगा. इनफैक्ट और क्या कटेगा? 20 भी कटेगा, है ना. Your final answer will be minus 5 by 9. Now one of you is asking कि minus 5 by 9 meters per second and 5 by 9 meters per second towards left सेम है क्या? बिल्कुल सेम है, बट एक चीज ध्यान में रखो कि ऑप्शन will technically expect you to interpret this result. Yes, the option will expect you to interpret. Since we have taken right as positive, the best answer is saying कि 5 by 9 is towards the left. अच्छा, you missed the object speed. Okay. तो फिर one of you is asking convert करने का जरूरत था क्या? नहीं, मतलब ये लेंथ सेंटीमीटर्स में जो है वो अपने आप कटेगा, तो वो कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं था. Object speed is with respect to ground. Object speed was with respect to the ground, but sorry. Thanks for correcting me. You're saying image is on the same side. Yes, image is actually on the same side. I'll erase the mirror. I'll draw it towards the right. Image negative. Image भी negative है ना? The image is actually formed on the same side. Notwithstanding all of that, these are your speeds. Okay. Cool. Any doubt in this? Okay. Homework, दो homework दे रहा हूँ. एक what if the image, no, so you'll normally be asked questions where the object moves along the line itself. For curved mirrors, you'll be asked questions where the object moves along the line itself. Image भी line के along ही move करे. All right. Now, ये एक homework कर लो. ठीक है. We'll just quickly see how much sums we can discuss. तुम ये एक homework कर लो. Homework क्या है? बस same, almost same values है. सिर्फ थोड़ा सा फर्क ये है कि तुम्हारा मिरर हिल रहा है. Your mirror is moving with a velocity of 4.
Yeah, be careful when you answer this question. Mirror itself is moving with the velocity of 4, with the velocity of 4 meters per second. Okay, values बाकी सब same है, but just be careful while attempting this. और क्या होमवर्क था? ये एक होमवर्क है. इस होमवर्क में मैंने ऑब्जेक्ट को ये दिया था क्या लास्ट टाइम? नहीं दिया था ना शायद. ऑब्जेक्ट को मैंने एक्सिस पे प्लेस नहीं किया, ऊपर प्लेस किया, ऊपर प्लेस किया है. And you try this as well at home. We'll discuss this in the next class. Find the length of the image formed. Find the length of the image formed. Okay. For the last time, do you have to find this with respect to the ground? You should never be asking that question. You always have to find with respect to ground. Unless mentioned otherwise, हमेशा ground के respect में ही निकालना पड़ेगा तुम्हें. ठीक है? अच्छा. What else? हाँ, क्या क्या डाउट था होमवर्क से? I believe I've given some homework from the exercises, right? Let's just quickly see. Vaishnav, which question? अच्छा Vaishnav, just hold on. Class के बाद बता देता हूँ, ठीक है? Just stay back a little bit after class. I'll tell you what that question is. Okay, exercise 1, 9 and 10. Exercise 1, 6 and 12. Okay. 2, 6, 7, 8, 9. Okay. 2 में लोग को doubt है. Let's see that. Which page is this on? Okay. A beam of light strikes one mirror of a right-angled mirror assembly at an angle of 45. The right-angled mirror assembly is rotated such that the angle of incidence becomes 60 degrees. Which of the following statements is correct about the emerging light beam? Okay. Rotated such that angle of incidence becomes 60 degrees. तो इसको ड्रॉ करके देखो. ठीक है, अब तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्रीज कर दिया यहाँ पे. ये नॉर्मल, ये 60 डिग्रीज हो गया. ठीक है. अच्छा, नोट की वो 60 है, तो यहाँ पे ये एंगल पीछे की तरफ 30 होगा और फिर ये एंगल 60 डिग्रीज होगा. तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि माई फर्स्ट मिरर makes an angle of 60 degrees with the horizontal. Okay, first mirror makes an angle of 60 degrees with the horizontal. The next mirror will make an angle of 30 degrees with the horizontal. Why? Because the two are perpendicular. Okay, these two are perpendicular. Okay, now थोड़ा मतलब ड्रॉ कर करके देख लो. यहाँ पे angle of reflection is going to again be 60. This angle is again going to be 30. ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे. अच्छा, ये जाके अब इसको हिट कर रहा है. हिट करते वक्त अब ये एंगल क्या हो गया? वो एंगल क्या हो गया? लुक एट द ट्राइंगल. ट्राइंगल इज है ना, 30 हो गया, 90 हो गया, ये 60 हो गया, 60 नाउ. ठीक है. फिर उसके बाद ये अब ये नॉर्मल के साथ 30 बना रहा है, ये नॉर्मल के साथ 30 बना रहा है, तो इसका रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ 30 बनाएगा.
and with this you can figure out कि ultimately this is now vertical. If you figure that, you'll realize कि this is actually vertical. कैसे? ये देखो, ये जो है ना, ये लाइन, ये वाला, ये एक्चुअली यहाँ पे 60 डिग्रीज हो जाएगा. This angle over here is 60 degrees. Agreed? 30, 60, 90 का ट्राइंगल बन रहा है. So that's 60. So can you see 60 plus 60 plus 30 plus 30, मतलब ये वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है? वर्टिकल लाइन के साथ 180 डिग्रीज बना रहा है, which is proof कि this is rising vertically. ये थोड़ा ज्योमेट्री बेस्ड है. There's no way around this apart from actually sitting and drawing, just being quick at labeling the angles, not getting lost in the lines. समझ में आया? Got the idea? Those who asked this question, let me know quickly. ठीक है ना? ऐसा ड्रॉ करके देख लो, you'll find कि ये vertical line से 180 degrees बना रहा है. Alright, so that was question number 2. Serial order में जाता है. You can see a lot of, so it will finally be parallel. It will be moving opposite the incident ray. So which option will we pick? We'll pick it will move through an angle of 15 degrees with respect to the original beam. Ayush, hold on. I think after class I'll show that. D आना चाहिए ना? It will emerge parallel to the emerging beam. It should emerge parallel to the emerging beam. Only one of the right mirror assembly is rotated. नहीं यार, in fact I can show you one thing. This will always make an angle. This will always emerge parallel. Answer should be D. Maybe you're seeing पीछे, या तो पीछे गलत है या तुम शायद गलत ऑप्शन पढ़ रहे हो. Others, some are telling me कि answer is D. Answer has to be D. ये irrespective of the angle, ये हमेशा ऐसा parallel ही होगा. Irrespective of the angle of incidence, ये हमेशा ऐसा निकलेगा. Okay, I think we're almost out of time. Let me just show you that in one of these apps I had that reflection, 2 mirrors. Look at this. इतना अच्छा demonstration. Look at this. Irrespective of ये क्या, this is a right angle mirror assembly. I don't know if you can see this clearly, but can you see that the reflected ray is always parallel to the incident ray? दिख रहा है ये? The final ray and the incident ray हमेशा parallel दिख रहा है. ठीक है? And you can prove that mathematically as well. मैंने जो 30-60 करते गया ना, तो एक्चुअली अगर थीटा 90 माइनस थीटा करते जाओगे, यू कैन प्रूव कि हमेशा पैरेलल निकलेगा. तो इसका आंसर डी ही होना चाहिए. ठीक है? डी नहीं है तो मतलब गलत आंसर है. डी होना चाहिए. As long as the mirror का angle stays 90, that will always be parallel. Cool? Got that? Okay. एक class एक third वाला करते हैं, and then maybe we can continue the remaining in the next class. Third wala, 2 mirrors labeled L1 for the left, L2 for the right, are parallel to each other. Person standing 1 meter from the right mirror looks into the mirror and sees a series of images. The second nearest image seen in the right mirror. So ये क्या बन रहा है यहाँ पे? What is going on? I'll upload these 2 pages in the doubts folder. Okay, support doubts folder. यहाँ पे L1 L2 है.
ये जल्दी से एक देख लो, L1, L2, the guy is standing over here. These distances are 20 and 10. Let me check that. Sorry, 2 and 1. And फिर the person looks into the mirror, this right वाला mirror, and the second nearest image seen. तो देखो अब क्या होने वाला है? This पहले तो first an image is going to be formed by a single reflection. Okay? So first an image is going to be formed by a single reflection. I'll need to actually make this a lot closer. Okay? So let's say this is 2, let's say this is 1. First image will be formed by single reflection. तो तुम्हें पता है कि इसका इमेज यहाँ पे इधर पीछे बनेगा 2 मीटर पीछे, है ना, और इसका इमेज यहाँ पे पीछे बनेगा 1 मीटर पीछे, ठीक है, ये हमें पता है. But then now what happens? Why do you see so many images in reality? As we saw in the example where the mirrors were at a right angle, I said कि अब ये image behaves like an object for that mirror. So when this image behaves like an object for that mirror, ये image कितना दूर है? 5 मीटर दूर है ना? When light bounces off this and hits that mirror, this image behaves as an object for that mirror. तो इसका image कहाँ पे बनेगा? ये इमेज का इमेज कहां पे बनेगा? ये 5 मीटर आगे है, तो इसका इमेज वो मिरर के 5 मीटर पीछे बनेगा, है ना? सो दिस इज योर इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्स्ट मिरर, देन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेकंड मिरर. अंडरस्टूड? So they were asking the second nearest image. Second nearest image 5 मीटर दूर होगा. समझ में आया? Let me know if you got this, guys. Okay. Cool. ठीक है. 6 दूसरा वाला होगा. 6 कौन सा? Should it be 6 really? 2 plus 1 3 plus 2 5. ये ऐसा हो जाएगा. थर्ड नियरेस्ट. तो देन यू हैव टू गो ऑन. तो अब जैसा मैंने इसका इमेज उसके अबाउट लिया, उस मिरर के अबाउट लिया, वैसा इसका इमेज ये मिरर के अबाउट लेना पड़ेगा, ठीक है? सो दैट इज द सेकंड स्टेप. तो ये जैसे ये 4 मीटर है ना, तो इससे 4 मीटर पीछे I21 बनेगा. दिस इज इमेज फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन ऑफ द सेकंड मिरर देन ऑफ द फर्स्ट मिरर, ठीक है? फिर देन द स्टोरी कंटिन्यूज. अब इनका रिफ्लेक्शन ले लो, इनका रिफ्लेक्शन, ठीक है? तो अगेन यू सिट एंड कैलकुलेट, अगर करना है तो, है ना, ये 4 + 3 ये 7 मीटर पीछे है, तो इसका इमेज और 7 मीटर उस तरफ बनेगा. So the third closest image will be at a distance of 7, and so on and so forth. ठीक है, उसने सिर्फ सेकंड नियरेस्ट पूछा था, सेकंड नियरेस्ट 5 आया. Got it? Okay. Bye guys. I'll release you. Those who yes, Vaishnav. Okay. Those who didn't get that question, I'll just tell you what that question was. Homework question. ये वाला ना, ये मिस आउट हुआ है. अमन, I'll just check that again. ठीक है, एक मिनट. अमन, okay, yeah, sorry. Distance from the person. My bad. Yes, Aman, right. Distance from the person is 6. Distance from the person, if that is what is asked, distance from the person, yes, 6. सही बोल रहा है. मिरर के 5 मीटर पीछे है, पर्सन से 6 मीटर के डिस्टेंस पे. That's fine. Yes. Second nearest is 6 meters away from the person. Cool. हाँ, इसमें क्या ये सवाल बताना था क्या? The guy who missed this, who was it? आयुष, ये बताना है क्या?
ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया, इसमें बस जो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी दिया था उसमें एक वेरिएंट डाल दिया है, मिरर को वेलोसिटी दिया है, उतना ही चेंज है। द लास्ट क्वेश्चन वी डिड, उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म डाल दिया कि मिरर को वेलोसिटी दिया, एंड यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ द इमेज। Yes, the same formula will be applicable, but velocities are going to be relative to the mirror. Aman, I'll ask you to check again. I don't think that answer is correct. All right. The one who's telling me ki you missed copying this is what you're saying. You missed copying this. I'll be uploading these 2 pages as well. I'll be uploading these 2 pages on in your drive, जहाँ पे तुम्हारे lecture notes हैं, है ना, रे ऑप्टिक्स के लेक्चर नोट्स हैं। तो नोटिस इधर सपोर्ट डाउट्स का फोल्डर है ना, उसमें डाल दूंगा वो 2 पेज को। ठीक है, व्हाट एल्स? यश, second nearest, what is your doubt? Second nearest is this, second nearest as seen in the right mirror. तो पहला फर्स्ट इमेज फॉर्म्ड इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के कारण, द सेकंड इमेज फॉर्म्ड इज ये इमेज के कारण। उसका डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर इज 5, बट उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पर्सन इज 6। ऑप्शंस पढ़ते वक्त यू रियलाइज कि वो पर्सन से डिस्टेंस पूछ रहा था, so then that distance comes out to be 6. Okay, yes साहिल पूछो।